Hello everyone, very good morning. I am back with our daily current affairs session. Today also we have some very important news with us, followed by some very important questions. So without any further delay, let's just begin our today's daily current affairs session. So the first news today that we have is related to the ancient Buddhist site. We will try to understand where is this site, where we will read about the features, the things which are being found there, all those things. Okay. So this ancient Buddhist site on the bank of Bhima River near Kanagalana, it's Kanaganathali, forming part of Sanati site in Kalaburangi district. Kalaburangi district is in Karnataka, has garnered attention. So this site is basically in the Kalaburangi district, which is in Karnataka. So इसने अभी हाल ही में काफी attention लिए. Why? Let's just try and understand. The Archaeological Survey of India, which is ASI in short, has now come up with a plan for the conservation of site at a cost of 3.5 crores. So, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनका ये प्लान है कि जो साइट है आप भीमा रिवर के पास, इसका आप कंजर्वेशन करेंगे and this will be, in the cost of 3.5 crores. And the work has just begun. So वहाँ पे जो काम है वो start कर दिया गया है in the cost of 3.5 crores. The conservation project includes resetting of the remains of Mahastupa retrieved in the excavation to their original position without much ornamentation and reconstructing fallen portion of the Ayaka platform. So what they are going to do is basically वो conserve करने, ये जो conservation project है, इसमें जो भी remaining महास्तूपा के जो भी निकाले गए हैं, उसको उनके original form में ही ज्यादा उसको साज सजाए बिना, उसमें कुछ नई हरकत किए बिना उसको कंजर्व करने का जो है प्रयास किया जाए, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रखने. You can see this image also in the news, so you will have a better idea. Okay. Now, as Ashokan edict was also found that provided a new avenue for the historical research on Mauryan Emperor Ashoka and Buddhist in its early years. So we know that Ashoka was an emperor of this of Mauryan dynasty, and उन्होंने बहुत ज़्यादा propagate किया था बुद्धिस्ट को, उनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था बुद्धिज्म का. So वहाँ पे एक अशोकन एडिक्ट भी मिला है, जो कि एक हिस्टोरिकल रिसर्च में कि मौर्यन एम्परर अशोक कैसे थे, या बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म था वो अपने अर्ली इयर्स में कैसा था एक रिलीजन, उसके बारे में काफी हेल्प मिल सकती है, काफी नॉलेज मिल सकती है इससे जो ये एडिक्ट मिला है. Kanaganathali excavations discovered an abandoned well also. So एक छोड़ा हुआ पुराना एक कुएं जैसा मिला है, which turned out to be the magnificent Mahastup, which was referred to as Adholka Mahachaitan. So this is the great stupa of the netherworlds in the inscription. So एक वेल मिला है पुराना छोड़ा हुआ, जिसको कि बाद में महास्तूपा बोला जाता था,
जिसको महास्तूपा की तरह यूज किया गया बाद में, और उसको अधोलुका महाचैतन्य बोला जाता है इन दी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकन टाइम्स. This too is considered to be one of the largest of its time, and the stone portrait is considered to be the only surviving image of the modern emperor, which had the inscription Raya Ashoko in Brahmi on it. So ये जो स्तूप है ये one of the largest है अपने समय का, एंड जो ये स्टोन पोर्ट्रेट है ये माना जाता है कि ये ओनली सर्वाइविंग इमेज है मॉडर्न एम्परर की, और उसपे ब्राह्मी में इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि राया अशोको. सो उस टाइम पे ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसका यूज होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज इन ब्राह्मी. Okay, so this was it about this particular ancient Buddhist site. So now we come to another important news. This one is very important from present perspective, and we can hope to have many other updates on this particular news. So जो भी time to time updates आएंगे, I'll bring those to you people. अभी क्या है जल्दी से पढ़ लेते हैं. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has proposed to amend the Environment Protection Act 1986. So ये एक्ट के बारे में अभी हमने रिसेंटली कुछ क्लासेस पहले पढ़ा था. डिटेल में ये एक्ट क्या है इसके लिए यू कैन जस्ट गो टू दैट क्लास एंड हैव द बेसिक आइडिया. अभी आज की जो हमारी सिचुएशन है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस करने की बात की जा रही है, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो क्या क्या है, क्या क्या उसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म है वो भी हम देखेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. And as I told you, we have already seen that what is this Environment Protection Act. So you can refer to the older class. So this MOEFCCE, which is nothing but Ministry of Environment, Forest and Climate Change, has proposed changes to 4 important acts, namely, अब ये जो मिनिस्ट्री है इसने 4 एक्ट्स में एक्चुअली चेंजेस बोले हैं. वो कौन कौन से 4 एक्ट है? The Environment Protection Act 1986, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Public Liability Insurance PLI Act 1991. So these are the 4 acts जिसमें कि इन्होंने propose किए हैं ये change. The ministry has proposed to scale down some of the punishments against environmental violations provided under these law. So क्या चेंजेस के लिए मांग की है, क्या अमेंडमेंट्स के लिए मांग की है कि भाई जो पनिशमेंट्स हैं अगर कोई इन लॉस का वायलेशन करता है तो वो जो पनिशमेंट उसमें लिखे हुए हैं उनको थोड़ा सा कट डाउन कर दिया जाए, मतलब छोटा कर दिया जाए. सो ये जो है ये प्रपोज किया गया है. नाउ व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. Okay, so the proposed amendment to Environment Protection Act. So the ministry has proposed to modify provisions of the EPA Act by replacing provisions that provide for imprisonment with ones that prescribe fine. So क्या बात की गई है? पहला अमेंडमेंट क्या करना चाहिए, क्या प्रपोज किया गया है कि जो अगर कोई वायलेट करता है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर कोई वायलेशन होता है किसी इंसान के द्वारा तो उसको जेल की जगह उससे फाइन जो है वो लगाना चाहिए, और जो प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट का उसको फाइन से रिप्लेस कर देना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट amendment proposed. This doesn't apply to violation that cause grave injury or loss of life.
बट ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है कि फाइन कर दो इम्प्रिजनमेंट की जगह, ये केसेस में अप्लाई नहीं होता जब कोई किसी की लाइफ की बात होगी, किसी जानवर को, किसी इंसान को, किसी दूसरे को मार दिया और कुछ ऐसी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी कर दी, तो उसमें इट डज नॉट अप्लाई इन दोज केसेस. At present, the violators face imprisonment of up to 5 years or a fine of up to 1 lakh or both. So अभी जो present situation है, अगर कोई violate करता है तो what they get 5 साल तक के imprisonment और या 1 लाख का fine या फिर दोनों. If the violations continue, an additional fine of up to 5,000 for every day would be levied during which such a violation continues. So अगर फिर भी ये कंटिन्यू होता है तो क्या होगा कि 5,000 रुपए रोज तक का एवरी डे का जो फाइन है वो लगाया जा सकता है जब तक कि वो वायलेशन कंटिन्यू रहता है. अच्छा, ये प्रेजेंट, ये प्रपोज्ड वाली सिचुएशन नहीं है. दिस पैराग्राफ is related to the present thing which is there written in the act. Okay. Now further, the jail term can also be extended to 7 years. So अगर यही जो जेल का टेन्योर है जो कि टर्म रहता है 5 years तक का, वो अगर ज्यादा ही वायलेशन हो रहा है तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है 6 years तक. Proposed amendment also include the appointment of an adjudication officer who will be entrusted to decide on the penalty against environmental violations. So एक adjudication officer भी मिल सकता है and ये मतलब proposed वाले में बोला गया है कि एक ऐसा adjudication officer appoint किया जाए जो कि डिसीजन देंगे रिलेटेड टू द पेनल्टी, क्या कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे लगेगी, किस केस में कितनी लगेगी, ऑल दोस थिंग्स. These funds collected would be accumulated in the environmental protection fund. और जो ये फाइन से जितना भी पैसा कलेक्ट होगा, this all will be accumulated, इकट्ठा किया जाएगा in environmental protection fund. Okay, I hope till here it is so much clear to you people. आगे देखते हैं. Now, what is the need for these amendments? We will try to understand. Various reports have highlighted that the existing legislations have been less effective. So, ऐसा देखा गया है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि जो existing legislation है वो उतना effective नहीं है. The study of the Center for Science and Environment pointed out that Indian court took about 9 to 33 years to clear a backlog of cases for environmental violation. So एक स्टडी हुई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंडियन कोर्ट्स है वो 9 से 33 साल तक लगा देते हैं जो पूरा एनवायरमेंटल वायलेशन के बैकलॉग केसेस है उनको सॉल्व करने में. तो ये बहुत ज्यादा समय है, 9 से 33 साल. बहुत से लोग का जिन्होंने वायलेशन किया होगा हो सकता है वो उनकी डेथ भी हो गई हो. At the start of 2018, nearly 45,000 cases were pending trial and about 35,000 cases were additionally added in the same year. So 2018 में ये डेटा है, थोड़ा सा उतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस जस्ट हैव एन आइडिया. टू हैव एन आइडिया यू शुड बी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. So further, over 90% of the cases were pending trial in 5 of the 7 environmental laws enacted. So 90% जो cases थे, they were pending in this regard, environmental laws scale. Now, arguments for the proposed amendment, we will try to understand. Experts feel that the new amendments would reduce delay in the adjudication of the environment-related cases as the existing procedures were extremely time-consuming.
तो एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि जो अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, अगर वो लागू कर दिए जाए तो जो डिले होता है, जब कोई वायलेशन करता है, जो डिले हो रहा है उसको पनिशमेंट मिलने में या उसको फाइन या पेनल्टी चार्ज करने में, तो वो जो डिले है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब इम्प्रिजनमेंट के प्रोसेस के लिए तो पूरा कोर्ट केस होगा, ऑल दो स्टेट, बट फाइन तो सिंपली दे कैन चार्ज। तो फिर कोर्ट में जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा, सो दैट इज व्हाई इट विल रिड्यूस द टाइम। फर्दर द प्रपोज्ड चेंजेस वुड रिगार्ड certain categories of crimes as civil crimes, which makes it easier to hold organizations accountable. So, अब जो ये changes आएंगे, अगर ये जो proposed changes है, if they work and if the amendment is done, then एक category बन जाएगी civil. We already know that there are categories of civil cases and then criminal cases. So they both are different. Okay, civil cases are like a personal or not, they are different from the criminal cases. जैसे severe कोई crime हो गया, criminal case, जैसे किसी की death, किसी को मार दिया, ठीक है, या कुछ harassment का case हो गया बड़ा, all those are the criminal cases, and civil cases are not that big one. Now arguments against the proposed changes, कि भाई इसके अगेंस्ट में, इसके क्रिटिसिज्म में लोग क्या बोल रहे हैं. Critics feel that the existing stringent provision were meant to prevent violations, and scaling down the punishments will lead to large-scale environmental violation. Now, they are saying, जो critics हैं उनको लगता है कि अगर ये proposed amendment पास हो गया तो क्या होगा, जो वायलेशन हो रहा है अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो बहुत बढ़ जाए, क्योंकि लोगों को पता है कि फिर तो पनिशमेंट है नहीं, ठीक है, जेल है नहीं, दे विल जस्ट हैव टू पे अ सिंपल फाइन एंड अपनी मनमर्जी करो उसके बाद. सो दिस विल समवेयर इंक्रीज द level of violation. Few experts feel that these changes will encourage a pollute and pay attitude. So that is why I was telling you कि पता है कुछ नहीं होगा, बस एक छोटी सी पेनल्टी पे करनी है, तो अपना जो मन मर्जी है वो करो और पेनल्टी दे दो, एंड देन अगेन कीप डूइंग व्हाटएवर यू वांट. सो ये क्या इनकरेज करेगा, पॉल्यूट एंड पे एटीट्यूड, कि भाई पॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट पे फॉर इट, एंड पे करो एंड फिनिश इट ऑफ. So this attitude will develop, which is not at all right for having a sustainable environment. ये तो we cannot have this attitude. They also believe that the amendments would provide a chance for occupation, as educating officers are provided with arbitrary power. So क्योंकि बात की गई है एजुकेटेड ऑफिसर भी होने चाहिए वहां पे, तो कहीं ना कहीं ये इसमें चांसेस हो सकते हैं करप्शन के, क्योंकि उनके पास पावर होगी, देन यू नो all these things we already understood. Okay, so with this we come to an end to this particular news also. Now we will move towards the next news, which is related to the red pandas are to be released from Darjeeling Zoo to Singalila National Park in rewilding program. Okay, so let's try to understand. So here is a red panda. If you have not seen, you can just have a look in the image. Okay, so let's try to read something about these red pandas. The red panda is a carnivorous indigenous to the eastern Himalayan foothills of western Nepal and southwest China. So ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. So eastern Himalayas, foothills of western Nepal and southwest China. It is also found in mountain ranges of Tibet, Sikkim, Assam, Bhutan. Okay.
The red pandas are characterized by reddish brown fur on the upper part and blackish fur on the lower part. So आपको image दिख रही होगी. So they have this reddish part here, fur, red fur है, and the blackish part here. Okay, ये देखो, ये जो पैर है इनके हाथ पैर, they are of black. It has a roundish skull with a medium-sized upright ears and blackish nose and eyes. Red pandas are shy, solitary, and arboreal animals and considered an indicator species for ecological change. Now, what is the IUCN status? That is endangered. मतलब जो इनकी संख्या है वो अब कम है एंड इनको conservation करना, protection करना is very important. IUCN is International Union for Conservation of Nature. ठीक है, so हर स्पीशी के लिए एक IUCN स्टेटस होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है जैसे एक्सटेंट हो गए, मतलब वो स्पीशी खत्म हो गई, सो ऐसे करके दिए जाते हैं स्टेटस फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी. Red pandas are listed under Schedule 1 of the Indian Wild Protection Act 1952. ठीक है, सो ये किस में है, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक आएगा, बट जस्ट टू हैव एन आइडिया. The red panda is the state animal of Sikkim. This is important, you should be aware of. So red panda जो है वो सिक्किम के एनिमल स्टेट है. Singalila National Park, because the news is that these red panda will be shifted to the Singalila National Park in a rewilding program. So we need to have an idea, understanding what is this and where is this particular park. Singalila National Park is located on the Singalila Ridge in Darjeeling, West Bengal. So ये कहाँ पर है? Very important. It is in Darjeeling, West Bengal. ठीक है, ये पार्क्स कहाँ पे है, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, किसके लिए फेमस हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. The park is part of the Eastern Himalayas. ठीक है, this is also important. The national park is located at an altitude of more than 7,000 feet above the sea level. Okay, so this is not very important, but to have an idea. Singalila, along with Neora Valley National Parks, is a protected area for red pandas. So ये जो है with Neora Valley National Park, ये दोनों जो parks हैं, ये protected area है for these red pandas, because वो already एक endangered species हो गई है. The park hosts a large number of mammals such as leopard, cat, barking deer, और ये सारे जो animals हैं, ये इनके लिए ये जो park है, ये वहाँ पे रहते हैं for their protection and conservation. Okay. Now we come to an end to this particular news. The another news that we have is related to the crisis in Sri Lanka. What is the update? We will try to read and understand that. Okay. So the Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa will resign on July 13 after the protesters stormed the presidential secretariat and official houses of the president and prime minister. So the president of Sri Lanka, amidst the economic crisis, he has decided to resign because बहुत ज़्यादा protester थे. You can see the image also. So he will be resigning on July 13. So in the wake of a severe economic crisis, massive protests and rallies were held demanding the resignation of the president and prime minister in the Iceland country.
So it's not just related to the president but also to the prime minister कि उनको भी resign करना पड़ेगा. Protesters are saying this. The protesters stormed the palatial office residence of the president and the heavily guarded presidential secretariat. So जो protesters थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा संख्या में प्रोटेस्ट किया है. Protesters also set fire to the private residence of the PM despite heavy security. And जो protesters थे उन्होंने PM के जो प्राइवेट रेजिडेंट था उसमें भी आग लगा दी heavy security होने के बावजूद भी. These new demonstrations were part of the Gotta Go Home protest. So ये एक प्रोटेस्ट है नया, Gotta Go Home, ताकि जो जिसके तहत कि लोगों को रिजाइन करवाने की एक पॉलिसी चल रही है वहां पे, तो ये उसके तहत ही एक प्रदर्शन. Now what is the impact of this demonstration? इस प्रदर्शन का क्या impact होगा? The parliamentary speaker said that president will step down from office. So जो parliamentary speaker है श्रीलंका के, उन्होंने कहा है कि जो president राजपक्षा है, he will resign and he will step out of the office. The PM also said that he would resign and felicitate an all-party government. So the PM is also, ready to resign now, and he will felicitate all-party government. ये सारी party मिलके government. These moves are said to be critical for the country's stability, as the task of forming an all-party government would be challenging, as the Sri Lankan opposition is fragmented and does not have a parliamentary majority. So all India party government form करने की जो बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं obviously एक problematic situation बन जाएगी. कंट्री की जो stability है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो श्रीलंका की ऑपोजिशन है वो उतना स्ट्रांगली उनकी पार्लियामेंट्री मेजोरिटी नहीं है. Further, a change in the leadership of the country will not mitigate its economic crisis, but instead will aggravate the situation, as the IMF may take more time to assess the stability of the new government, and also the bilateral leaders might be skeptical about lending money to the country. So, जब change होगा leadership में, तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कम करने की जगह वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो थोड़ा टाइम लेके असेस करने में स्टेबिलिटी को पैसा देने से पहले कि न्यू गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम कर रही है, वेदर इट इज स्टेबल, ठीक से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, व्हाट आर ऑल दी थिंग्स. एंड ऑल्सो जो नए लीडर्स हैं उनके लिए भी ये स्केप्टिकल संदेह वाली सिचुएशन हो जाए. Okay, so with this, we come to an end to our daily current affair news today. Let's just quickly revise all the news and we will move towards the questions further. The first news today that we had is related to the ancient Buddhist site, which has the Ashoka edict found. और कहाँ पे है क्या है वो सब हमने देखा, ठीक है. फिर उसके बाद the next news that we saw was related to there is a proposed amendment for altering green laws. 4 laws के अंदर बात की गई है. हमने मेनली बात की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या क्या बात है, प्रपोज्ड क्या अमेंडमेंट्स हैं, कैसे करना है, उसके फॉर्म में क्या पॉइंट्स हैं कि क्यों जरूरत है इसको अमेंड करने की, एंड इसके अगेंस्ट में क्या कह रहे हैं कि इसकी क्यों जरूरत है इसको अमेंड नहीं करने की, या फिर जो प्रपोज्ड चेंजेस बोले गए हैं उसके अगेंस्ट में उनके पास क्या चीजें कहने की, वो सब हमने देखी. देन वी केम टू दिस नेक्स्ट न्यूज विच वाज रिलेटेड टू द रेड पांडा, जिनको की शिफ्ट किया जा रहा है सिंगालीला नेशनल पार्क में in a rewilding program, क्योंकि they already are endangered. ठीक है. फिर हमने देखा कि सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पे है
कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वहां पे, किस पार्ट में आता है, ऑल दोस थिंग्स वी सॉ. Then we move to the next news, which was related to the Sri Lankan president resign, कि कैसे प्रोटेस्ट हुआ, क्या और चल रहा है. देन वी ऑल्सो सो कि ये जो प्रोटेस्ट है इसके तहत जब जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर देंगे और जो ये ऑल इंडिया पार्टी बनाने की जो बात हो रही है उससे कैसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कम करना और भी डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज न्यू गवर्नमेंट विल टेक टाइम, स्टेबिलिटी असेस करने में उनकी टाइम लगेगा. जो नए लीडर्स आएंगे देयर अंडरस्टैंडिंग इन ऑल दोस थिंग्स विल आल्सो टेक टाइम. So this is how we saw this news. Now we have some very important questions which we are going to see now quickly. So the first question we have some pairs. So एक side पे we have National Zoological Park and दूसरी side पे state. ठीक है, तो सामने सामने लिखा है. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेल कि इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है. मतलब जो पार्क है वो उसी स्टेट में है जिसके सामने वो लिखा है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट इज सिंगालीला नेशनल पार्क, ये तो हमने अभी देखा है. पद्मजा नायडू पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क विच इज इन उत्तराखंड. तो इनमें इससे कौन कौन से ठीक है आपको ये बताना है. This also I think you must have seen in this image. So यहाँ पे भी एक आंसर का हिंट है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. So this you can also guess क्या आपको I have already shown you. So you have to tell the right answer. So answer correct is A, because हमने देखा सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, ये ठीक है. पद्मजा नायडू पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो ये गलत हो गया. न्योरा वैली नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. दिस इज योर होमवर्क. कहाँ पे है न्योरा वैली नेशनल पार्क. ये एक्चुअली हमने अभी लास्ट पे देखा है जब हम न्यूज देख रहे थे रेड पांडा वाली. सो इफ यू रिमेम्बर यू कैन जस्ट कमेंट एंड टेल मी ये कहाँ पे है. सो इसलिए आंसर 1 इज द करेक्ट. सो पार्ट 1 इज द करेक्ट बिकॉज ये वेस्ट बंगाल में है, ये भी वेस्ट बंगाल में है, पद्मजा नायडू हिमालयन. एंड ये देखो आंसर आ न्योरा वैली नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल. सो ये तीनों जो पार्क है ये वेस्ट बंगाल में है. तो सेकंड वन इसलिए गलत है क्योंकि ये उत्तराखंड में नहीं है. सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव दिस पेयरिंग. सो एक तरफ लेक्स एंड वेटलैंड्स है, दूसरी तरफ लोकेशंस है. यू हैव टू टेल वेदर दे आर राइट. होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, सत्तम कोटा तमिलनाडु. So how many pairs are correctly meshed? You have to tell the correctly meshed pair. Okay, only one, only two, only three, all the. Okay, so only two. Of which two? This you have to understand through this explanation. So one is not correct because Hokra wetland is located near Srinagar in Jammu and Kashmir and not in Punjab. ठीक है, तो ये वाला गलत होगा. Then pair 2 is correct because Renuka wetland is located in the Sirmaur district in Himachal Pradesh. So this is correct. Part 3 is correct also because Rudsagar lake is in Tripura only. So this is correct. Then pair 4 is not correct because Sassamkota lake is located in only Kollam district, Kerala में है. So this is wrong because ये तमिलनाडु में नहीं है, केरला में. So only 2 pairs are correct, 2 are wrong.
So second will be the right option. B will be the answer. Okay. The next question that we have, ye to I think you people will be able to answer. Okay, we have three statements in front of us. We will then be, trying to get the answer. The red pandas have been listed as endangered on IUCN Red List. It is in the state. It is the state animal of Sikkim. ये सब अभी पढ़ा है. अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना है तो आप ये आंसर आराम से कर पाएंगे. Red panda is a Schedule 1 animal according to Wildlife Act 1972. Options हैं, आपको actually correct बताने हैं, okay? 1 and 2, 2 and 3, only 3, 1, 2, 3. This is very easy. अगर आपने थोड़े से भी ध्यान से सुना है what I was teaching, then you will be able to answer this particular question. Okay? So all of these are true. Option 4 is correct. Statement 1 is correct because yes, वो IUCN status में endangered है. मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सिक्किम का स्टेट एनिमल है ये और ये शेड्यूल 1 में लिस्टेड है. ये भी हमने देखा था अपने न्यूज. ओके, so this is it. I think yes, this was the right last question that we saw today. With this, we have come to an end to our daily news session for today. And I'll come tomorrow with another news session where I will be bringing some very important news. Till then, keep studying. And also, if you have any doubt, you can just comment and ask me. Till then, take care and keep studying. Bye-bye.